Ladies and gentlemen, sorry for the delay. There's been a gap between our earlier interaction on outpatient assessments on account of an emotional trauma in my life, on account of the death of my very dear teacher, Malik Hussain Varsha. So I would request all of you to spare a thought for him. If not all, most of the stuff that I share with you or talk about is imbibed from my great teachers, Journalist Hussain and Professor Bashir. So if at all there is ever going to be any credit of passing on data or information with all of you, it has to go to those two great teachers of mine. So I'd very humbly request you to spend a minute in his silence, starting from now. Thank you very much for sparing the thought. So I thought, since there has been a bit of a gap between all that transpired between us the last time and the component that we're going to cover today, I thought we'll first of all spend a few minutes trying to recapitulate on what we've discussed earlier as regards psychiatric outpatients. So I'll have a very quick recap on what did we discuss the last time. So for some of us who were part of the previous discussion, it might be a little boring, but for others, it may be just a revisit of thoughts that are already with them, but visited in a slightly different way. So we will then follow up with showing to you the major areas that you need to cover in a psychiatric assessment in an outpatient of a patient suffering not from a psychosis, as we did the last time, but from an anxiety-related or mood-related disorder. We'll have a demonstration of skills for you at the end as well, and then we're going to have a question-answer session to clarify any points, areas that you would like me to elaborate upon or demonstrate again to you. As you know, we try and focus during these talks largely on skills rather than on theoretical aspects. So there might not be enough knowledge component in what we are going to discuss today. It's essentially more skills intensive. So let me just very quickly share with you what we had discussed the last time. So if you recall, we had highlighted to you that there are various situations in which psychiatric assessments are taking place. There are various reasons why people come to out for outpatient assessment, and some of them are written right in front of you. So if you very quickly go through this, we will move on. Now, one of the issues was that we highlighted was that all of these patients who come from diverse backgrounds, some requiring extensive assessment, some requiring a very quick intervention, are lumped into one single room. And that is a typical psychiatric outpatient of a teaching hospital, or for that matter, a general hospital, OPD, an emergency setting, and even a clinic, primarily dealing with mental health patients. All these patients sitting in one place. So is that really fair? That's the question that we had for you. So
we said, okay, now how about considering all these patients and thinking that should we just line them up, award them a ticket saying, okay, number 1, 2, 3, 4, and the 30th patient would appear in front of you, probably suffering from a very severe drug reaction, which required an urgent intervention. The 40th patient in your OPD might be a patient who just required a CT, as they call it, or the continued treatment. And would it not therefore be unfair that some of the emergency patients may get a link, may get a ticket of having their turn much later on? So what is the solution? So here is a little solution that we had proposed, and that was that you have to make the area where patients are waiting having at least these essential ingredients. Now we'll read through them. It is indeed an idealistic psychiatric outpatient that we are talking about, and most hospitals wouldn't have it. But it actually sets a tone for all of you, the future psychiatrists of Pakistan, that when you are designing a mental health facility for yourself or for a government sector hospital, these are the essential requirements. Like you cannot have an operating theater without those essential ingredients that a typical operating theater requires. You would require a set of facilities that are to be taken care of when you are setting up a mental health facility for outpatient assessments. Here, the most important aspect that I wanted to highlight to you was the waiting area triage, which is done in collaboration with your reception staff. So you go out there and decide which patients require the most urgent attention. So rather than giving them tickets for coming in sequentially on as depending upon when they arrived or reported at the OPD, a much better idea would be to do a waiting area triage in collaboration with your reception staff and provide help to the most needy, the most urgently required help that an individual may need. So that is the part, and you can set up actually a separate facility where people with continued treatment or who are just here to get their medications reissued visit. So so that is the part that often is not done. So I thought it will be very useful for you to have a look at this possibility. Then, of course, we demonstrated to you the importance of undertaking a first consultation in a new case. That first consultation usually would require a minimum of 30 minutes, but may require more. We highlighted some of these steps to you that are here. The key word here was, and probably the most important message that I wanted to give you was that initially at the start of your interaction with your patients or their visitors, it's very important that you deny first input from the family and expose yourself to the patient first of all. That is very, very important. Your first exposure to the patient, that first interaction. Now, it does not mean that psychiatric patients' data coming from the family or people they live with or residing with is unimportant. In fact, it's crucial. In fact, the longitudinal data about the patient may be required from his family and the people that they're living with. And that is crucial as far as the diagnosis and management of a patient is concerned. But it is the timing that I was trying to highlight. If you're going to start with your first interaction with a family member, they might color your view and vision about a patient. So you must catch the first glimpse, interact with the patient, and then of course, take input from the family and all others who are relevant and important in due course. And the second point was that before you start your interaction with the patient, do provide him with an opportunity to adjust to your environment.
the environment can be very daunting and something that a patient has never seen before. It could actually, particularly in a case who is confused or disoriented, it can become, a little challenging. And for somebody who is in psychosis, may actually enhance or increase paranoia. And of course, it is also important to understand that it is quite stigmatizing to actually get into the office of a psychiatrist, because there are all sorts of stories and all sorts of misconceptions attached to our profession, the mental health professionals. So that initial 1 minute of adjustment where you're not really interacting with the patient while the patient is there in your room is very, very important. And also gives it an opportunity to you to show to the patient that you're extremely dedicated and devoted to him alone, in which you can go around, shutting off your mobile or organizing your things on the table while he's making those adjustments. And also give a chance to the patient to actually start the conversation if he so wants to. So that holy golden first minute was something that I highlighted to you. Then, of course, were the routine things that all of you are familiar with, and the part that I missed and subsequently was pointed out by one of our participants was the importance and significance of undertaking a journal physical and a relevant systemic examination of patients. And some of the crucial parts in that examination are highlighted on this screen on the last line. So if you have undertaken a first-time consultation without taking vitals, without undertaking fundoscopic evaluation, basic tendon reflexes, evaluation of the thyroid gland, then I'm afraid, it is not a very, very good idea. And of course, these days when you're using drugs that can create as mood stabilizers, like carbamazepine and lamotrigine, can produce all sorts of skin rashes, then of course you can have people coming in with cuts, intravenous needle marks, etc., the examination of the skin. And of course, the BMI, given the fact that most of the drugs that we now use alter the eating habits of our patients. So that also is an important aspect to cover in the examination part. So if you have undertaken an examination that has not covered these aspects, I'm afraid your first consultation has missed a very, very important and a crucial aspect. The first consultation with a new case, we highlighted the areas that you need to cover. I'll just give you a few seconds to just scan through this slide. The newer aspects of our discussion was trying to match symptoms with receptors. Now, for that, you would require a very thorough understanding of the neurophysiology and the psychopathology of psychiatric patients. On one hand, you need to understand all that happens at the level of the synapse and the neuron and how neurons talk to each other. But at the other level, you need to have a very strong understanding of psychopathology. What truly is a delusion? How is it different from other aspects of thoughts? How an idea is different from a delusion? How do you establish that? Why is obsession called an obsession? And what is its link with anxiety? Those little details that I would not like to go into at this point in time. So it's very important to do that. And while you're writing a prescription, it's important to match the diagnosis and the receptor activity in individual together, and the prescription has to reflect that kind of that was one aspect. That there was the importance of treatment adherence, directly observed treatment method. The third aspect was that it is very important that you record what the patient has said and let the patient clarify, even if he is in a state of psychosis, but has been able to form some degree of rapport with you, to clarify if what you have written down verbatim from his side means the same to you and the patient. Those were some newer aspects of the discussion that we had done. We had also highlighted to you essential don'ts from the discussion as well, which things that you should never really be doing, or doing them would be hazardous and counterproductive as far as your assessment of patients. Let's have a quick look on this slide.
there are some particularly important aspects. One is that you can never finish a consultation without having gone through the previous documents of a patient, his medical records, his treatment history, all that has happened in the past. If there's a forensic record on the patient, etc., etc. Peruse those papers, but do not start your consultation with perusal of those papers. Let the perusal of the papers come in after you have made that initial assessment and come to a provisional diagnosis. And then not going through the papers would be equally dangerous. So you don't use them at the start, but you certainly make sure that you peruse them at a later stage in your interaction with the family and the patient. It's very important to ensure that you do not enter confidential or those aspects of interaction with the patient that are crucial to him and concern some psychological trauma or forensic material that he would not like you to betray to the rest of the world. So therefore, it's very important that you do not enter it on the records. However, translate it into a fashion that it is recorded, but this paper then is not with the family and not accessible to every Tom, Dick, and Harry. Okay, so then we said that this particular aspect that I'm going to cover now. Now, here is an interaction in which I would like you to focus a little more, but this is the part that we are going to do now. What I'm going to do is just highlight the principles to you first, take your input on that, and then try and demonstrate to you how you can do it efficiently. Now, remember, the major issue with outpatient consultations is time. Here is a busy OPD. Here is an OPD with 30, 40, 50 people sitting outside your clinic, and some of them could be emergencies, and yet you have this patient who is coming for a follow-up. What do you do with them? How do you efficiently make sure that you do all, yet conserve time? Now, my first suggestion to you is that for any skill, it's very important to emphasize initially on doing it properly rather than doing it quickly first. Now, I don't know how I can make it even more clear than the way that I'm trying to say it, or I cannot overemphasize it enough. That is, अगर आपने कोई भी skill हासिल करनी है, कोई भी, I'm not talking about outpatient skills and psychomotor skills of undertaking a psychiatric follow-up evaluation, any skill, पहले उसको ठीक तरह करना सीखें, ठीक तरह, ताकि उसके कोई भी steps जो हैं वो आपके दिमाग में से कभी निकले ना, ठीक तरह, चाहे उसको कितना ही टाइम लगे. लेकिन अगर आपने पहले जल्दी जल्दी करना सीख लिया, तो फिर वो एक तरह का आपके लिए एक हैजर्ड बन जाएगा सारी उम्र का, and you will have this way of doing things very quickly, crisply, but then you're likely to make errors and mistakes and sometimes blunders in outpatient. So the first message that I'm trying to give to you here is not written on this slide, is please try to learn the steps that are involved. अब वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए शुरू में आप फर्स्ट ईयर के ट्रेनी है साइकाइट्री के, एमसीपीएस के, एफसीपीएस के, व्हाटएवर, और फॉर एन इंटरनेशनल सेटिंग, प्लीज डू थिंग्स प्रॉपरली. आपको टाइम लगता है, कोई मसला नहीं, बता देंगे कि मुझे आता नहीं है करना, मुझे देर लगती है करने में, क्या हो जाएगा. वो जो पीछे बैठे हुए वो तो बाहर तो 20 लोग बैठे हुए हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं अपने करने के लिए कि जी हाँ वो अनफॉर्चुनेटली. सो लेट अदर्स टेक दैट शेयर. लेकिन अगर आपने इस प्रेशर में अपने रिसेप्शनिस्ट के कि जी बाहर 30 लोग बैठे हैं और टक आपने निकालने शुरू कर दिए लोग मोरे लगा के, सो आई एम सॉरी, you would lose on your skills. It's a very important message for anybody who's starting training in psychiatry. कि उसको पहले चीजों को ठीक तरह करना आना चाहिए, चाहे उसमें टाइम लगता है. फिर ये मैं आपको श्योर करता हूं कि जिस वक्त आपको स्टेप्स अच्छी तरह से आ जाएंगे तो फिर उनको तेजी से करना भी आ जाएगा. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं. आपने जब गाड़ी सीखी थी तो आप सोच के गियर लगाते थे और सोच के आप एक्सेलरेटर छोड़ते थे और एक्सेलरेटर दबाते थे और क्लच छोड़ते थे और कहते थे अच्छा ये कहीं बंद ना हो जाए गाड़ी, और तो टाइम लगता था सब चीजों को करने में. लेकिन
یہ نہیں کرتے تھے آپ کہ بریک پر پاؤں لگا کے اور ایکسیلریٹر دبا رہے ہیں. آپ کو میتھڈ کلیئر تھا کہ پہلے کلچ کو چھوڑنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اور پھر ایکسیلریٹر کو دبانا. اگر یہ میتھڈ ہی آپ کو نہیں آتا اور میتھڈ آپ نے غلط طریقے سے سیکھ لیا تو ہر دفعہ گاڑی کا بیڑا غرق ہونا لازمی امر ہے. So the important aspect is to please understand these steps that I'm going to try and highlight to you. And then I'll demonstrate to you that at my level of experience and age, I can still make mistakes and omit some of the aspects that require to be covered in a follow-up. So کوئی بات نہیں, ایک آدھ کوئی اسٹیپ اس میں سے مس ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا, اور جلدی میں آپ کے ہو جائے گا, تو کوئی قیامت نہیں آنے لگی. لیکن اگر آپ نے اوور آل کوئی شارٹ کٹس بنا لیے اور ان شارٹ کٹس کی وجہ سے آپ نے کروشل چیزیں مس کرنی شروع کر دی تو پھر بہت گڑبڑ ہونے والی ہے. سو I just go through these few steps that are, in my opinion, golden 7 steps that you need to follow during these. I usually color them because I consider them a rainbow of producing happiness in the life of a patient and the psychiatrist if you follow them. I haven't colored them largely so that you can just concentrate on what I'm trying to say rather than get carried away by the colors on them. The most important is the same as we did earlier. That golden first minute is very important in psychiatric consultations. میں اس کو بار بار اس لیے emphasize کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو زندگی میں اتنا سرو کرے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ جو ایڈوانٹیج آپ کو دے گا 1 منٹ مریض کو دینا ایڈجسٹ کرنے کے لیے, اپنی بات شروع کرنے کا اس سے چانس دینا, بجائے اس کے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ہولی گولڈن first minute of your interaction with the patient, where you let the patient start the conversation rather than you starting the conversation, is very, very important. And the first color of the rainbow that I'm going to try and emphasize. اور پھر میں آپ کو یہ کر کے بھی دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. تو پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنی conversation start کر رہے ہیں تو یہاں سے نہ start کریں کہ ڈیزیز ڈسکس کرنی شروع کر دیں پہلے. اچھا جی, تو پھر آپ کو ڈپریشن تھا تو ابھی آپ کی ڈپریشن کا کیا حال ہے؟ اچھا, تو وہ جو میں نے آپ کو نیند نہیں آتی تھی تو اب آپ کی نیند کا کیا حال ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس سے بات کرنی شروع کریں تو پہلے اس سے بات کریں, پھر اس کی بیماری کے بارے میں بات کریں. ایک شخص کو بیماری ہے, بیماری ایک شخص نہیں ہے. سو یہ جو جملے, یہ بہت دفعہ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو اس طرح کے جب ہم ورڈز استعمال کرتے ہیں نا کہ ہی از اے اسکیزوفرینک, ہی از اے ڈپریسو. ابھی میں ایک ڈپریسو کا انٹرویو لے کر آ رہا ہوں. ایک وہ obsessive تھا آیا ہوا, میں نے اس سے پھر باتیں کی. ایک ایپیلیپٹک ہے, اس کو میں نے داخل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچولی مریض کو سائڈ لائن کر دیا, مرض کو پکڑ لیا. تو چونکہ ہم نے ٹریننگ اپنی ہمیشہ بایولوجیکل ماڈل سے کی ہوئی ہے, شروع سے MBBS کے دنوں سے ہم اس طرح سے جملے سنتے رہے ہیں سرجیکل وارڈز میں, میڈیکل وارڈز میں. وہ نیمونیا والے کو بلانا ذرا, میں اس کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں. اچھا, وہ جس کو CA ڈائگنوز ہوا ہے اس کو ذرا لانا, اس کا CT کروانا ہے. تو چونکہ ہم نے ہمیشہ ڈیزیزز سے دیکھا ہے لوگوں کو, تو سائیکائٹری کرتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ نہیں, بندہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی ڈیزیز بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ڈیزیز اسے ہوئی ہوئی ہے, وہ ڈیزیز کو نہیں ہوا. So that this person, your chance to talk to the person as a start after that holy first golden minute is over is very important. وہ بھی میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا. آپ وہ کیا کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں بات کرتے ہوئے, وہ ریپو بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ موسم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اگر اس نے کوئی خاص طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ جنرلی اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کس طرح سے ہاسپٹل پہنچا ہے, اس کی کوئی مشکل تو نہیں ہوئی, اس کو OPD میں کام کرتے ہوئے یا اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے تو زیادہ ٹائم نہیں لگ گیا. کوئی بھی موضوع میں آپ کی عقل پر چھوڑتا ہوں اور آپ کی فراست پر چھوڑتا ہوں کہ آپ, لیکن بات اس آدمی سے کیجئے, بندے سے کیجئے, بندی سے کیجئے جس سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, اس سے مرض کے بارے میں بعد میں بات کیجئے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگلی بات مرض کے بارے میں بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم بعض کا OPD میں یہ کرتے ہیں کہ ایک دم
दवाई पर चले जाते हैं। अच्छा तो मैंने आपको दवाई दी थी, फिर क्या बना आपका? यार दवाई की भी बात करते हैं, लेकिन पहले जो आपने उसको तशखीस करके, और आपको याद हो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अपना जो भी प्रिस्क्रिप्शन पैड होगा उसकी बैक साइड के ऊपर आपने उसको तफसील लिख कर देनी है, उसको डायग्राम बना के देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि इधर आपने दवाई लिखी है तो इधर उसकी बीमारी का हाल और उसके रिसेप्टर्स आसान अल्फाज में मरीज की लैंग्वेज में आपने उसको बना के दिखाएं, उसको डायग्राम बना के दिखाएं। कभी भी मैं अगर असेस करूं किसी पेशेंट को और अगर मैंने उसके पास सिर्फ वो हिस्सा लिखा है जिसका ताल्लुक केमिस्ट से है या फार्मेसी से है, जिसने ये रीड करके उसे दवाइयां देनी है, और फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि दवाई कितने बजे देनी है, लेकिन मरीज के को ये नहीं पता कि उसका मर्ज क्या था, वो मर्ज उसको किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी कहानी क्या है, वो फिर इस कागज को शायद इतना ज्यादा लुक आफ्टर नहीं करेगा। और अक्सर आप देखेंगे कि जिस वक्त वो वापस आएगा आप उसे कहेंगे वो मैंने आपको एक कागज दिया था, नुस्खा दिया था, तो मैं घर छोड़ आया हूँ, मुझसे गुआच गया जी, वो मैं भूल आया हूँ, वो गुम गया जी, वो फट गया जी, वो बारिश में रह गया था जी, वो मेरी जेब में पता नहीं क्या हुआ, कुचर मुचर हो गया। क्योंकि उसकी वैल्यू उसको लगता है कि नहीं है। वो फिर क्या लाएगा आपके पास? वो एक शॉपर के अंदर दवाइयां लाएगा, नुस्खा भूलेगा, उसमें दवाइयां लिखी हुई थी ना, और क्या था डॉक्टर साहब उसमें दवाइयां लिखी थी, मैं ले आया हूँ आपके लिए, ये शॉपर है ना जी, इसके अंदर ये देखिए शॉपर के अंदर सारी दवाइयां मैंने ली। तो वो उस कागज की अहमियत बढ़ जाएगी, वो उसके लिए एक बहुत ही जरूरी कागज बन जाएगा अगर उस कागज की बैक साइड के ऊपर आपने उसकी बीमारी का थोड़ा सा तस्करा और हाल लिखा हुआ है कि ये तकलीफें आपको इस वजह से हो रही हैं। वो जो मैंने आपको कहा था ना कि रिसेप्टर को साइकोपैथोलॉजी के साथ लिंक करें, हमारा ख्याल है कि वो सिर्फ टेक्निकल जुबान है जो कि मुझे और आपको एक दूसरे की फॉर्मुलेशन को शेयर करते हुए कम्युनिकेट है, नहीं, उसको अगर आप ट्रांसलेट नहीं करना आता मरीज की लैंग्वेज में आपको, तो सीखिए। और इंशाल्लाह किसी रोज हम ये भी एक्सरसाइज आपसे करेंगे कि किस तरह से मरीजों के सिम्टम्स को जो रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के, जिनको मैं और आप डील करने की कोशिश करते हैं दवाइयों के जरिए, कैसे समझाया जाना चाहिए। वो एक सेपरेट एरिया है, पर हम जरूर उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू के किसी सीरीज में। So that is the part in which that prescription is very very important, and that backside is very very important of that paper जिस पर आपने बीमारी लिखी है और उसका हाल लिखा है। अब आपने जब डिजीज के बारे में पूछना है और उसके बाद डिजीज के बारे में पूछने के बाद कि आपके डिप्रेशन का क्या हाल है, आपकी मैंने तशखीस की थी, उसकी क्या सूरत हाल है, अब आप उसके बारे में जरा मुझे थोड़ा सा बताएं, उस तशखीस के बारे में आपने सोचा, क्या सोचा, मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा उसको। तो फिर आगे चलकर कुछ स्टेट्स हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं, जो कि इन्फ्लुएंस हुई थी उसके नतीजे में। स्टेट्स क्या थी? स्टेट्स ये थी कि उसकी जिंदगी में तब्दीलियां आ गई थी, उसकी रिलेशनशिप्स में अपनी जात के साथ, उसकी रिलेशनशिप्स में दुनिया के साथ, उसकी रिलेशनशिप में अपने काम की जगह पे, शादी की जगह पे, घर में, मामलात में, जिंदगी की, उसके जिस्म के हालात बदल गए थे। तो जब हम उसकी कैफियत के बारे में जानना चाहेंगे बीमारी की, ये कैफियत में आप क्या क्या जानना चाहेंगे ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 3 चीजों से स्टार्ट करना है। पिछली दफा से अब तक जब आप मुझसे 15 दिन पहले मिले थे या मिली थी, तो आपकी बीमारी और आपकी कैफियत, जिंदगी की कैफियतें क्या हैं, इनका मैं अभी आपसे जिक्र करता हूँ। लेकिन ये 3 चीजें हैं और आसान तरीका ये है उसका आउट पेशेंट में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहते, तो आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो इलाज मुआवजा हुआ इसका पिछले 15 दिन में हम इस तरह से मुवाजना कर ले कि हम आपके सामने यूं रखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हम मान लेते हैं कि जब आप मेरे पास तशरीफ लाए थे तो कैफियतों के लिहाज से, बीमारी के लिहाज से और उनकी आपके पर इम्पैक्ट के लिहाज से आपकी बीमारी 10 नंबर पर थी और सेहत 1 नंबर है। तो आपकी बीमारी ने 1 नंबर की तरफ कितना सफर किया, यानी कि शिद्दत 10 थी, आज 8 है, 6 है, 5 है या 4। बाज लोगों ने ये किया हुआ है और ये बहुत अच्छा मेथड भी है, बाज दुनिया के क्लिनिशियंस ऐसा करते हैं कि उन्होंने ओपीडीज में रखे हुए हैं ये तीनों चीजें लिखकर। तो आप भी कर सकते हैं। ओपीडी में कागज के ऊपर लिखा हुआ है 1 to 10 पर आप एज ए पर्सन
आपकी डिजीज और आपकी स्टेट्स तीनों पर आगे उसके मार्क बना हुआ है, एक कॉन्टिन्यूम बना हुआ है 1 2 3 4 5 10 being severely ill, 1 being absolutely healthy. तो वो उस ओपीडी में बैठे हुए मार्क करके लाते हैं अपने डॉक्टर के लिए, अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकाइट्रिस्ट के लिए, सोशल वर्कर के लिए, तो पहले क्या हाल था और आज क्या है. सो बिफोर एंड आफ्टर. तो बिफोर एंड आफ्टर अगर ये नहीं ओपीडी में करके लाए तो यहाँ करवा लीजिए कागज के ऊपर. और ये काम भी आप प्रिस्क्रिप्शन की बैक साइड पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं. तो एक कॉलम बना लीजिए जिसमें एज ए पर्सन, एज in terms of disease and in terms of कैफियत या states of the individual, वो बेहतर हो रहा है on a scale of 1 to 10 या वो खराब हो रहा है on a scale of 1. तो मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मेरी बीमारी की शिद्दत पिछली दफा 8 थी, इस दफा 10 हो गई. तो एकदम ये कागज देखकर आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसके बारे में क्या करना है. तो एक छोटा सा ये एक तरीका है अपनी कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाने का. आपको बताया, हमने शुरू में ही कहा कि हम इससे वक्त भी बचाना चाहते हैं और वक्त का एफिशिएंट इस्तेमाल भी करना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कवर PDS on a scale of 1 to 10. Let the patient comment on it. The third color of the rainbow of OPD assessment is functioning. I'm sure ये लफ्ज आपने 1000 दफा सुना हुआ है, और जब हम फंक्शनिंग की बात करते हैं तो we talk of biological functions, and in biological functions you know the aspects that we covered. Then we talk about the social functioning of an individual. We also talk about the occupational functioning of an individual, and beyond these three functionings we also take into account the risks for violence towards other, risks of self harm. और इसके अंदर suicidality बड़ी इंपॉर्टेंट है. फंक्शनिंग और रिस्क से हवाले से भी बहुत सारे साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा स्पेसिफिकली आप मरीज की लैंग्वेज में रादर देन ऑन अ स्केल पूछें. बहुत चूंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं तो इनको कवर करना. लेकिन यहाँ ये ना भूल जाइएगा कि ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट का, बीमारी का नहीं, आपके इंटरवेंशन का उनके जॉब पर और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस पर क्या असर पड़ा है. और यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की सेटिंग का. मुझे नहीं पता अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो वहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं. पाकिस्तान में अक्सर ट्रीटमेंट्स मरीज खुद अफोर्ड कर रहे होते हैं. कुछ लोगों को दवाइयाँ मिल जाती हैं अस्पताल से, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती. आपकी ट्रीटमेंट का उसके इकोनॉमिक्स पर क्या असर पड़ा है. You might actually get amazing responses and answers. Patients would tell you that when they went to the medical store, you had written 3 medications. They had taken those 2 that they could afford. And one of them was a multivitamin, the other a painkiller. And the SSRIs that you had prescribed were expensive, and therefore he had decided not to take them. Why? Because he couldn't afford them. So this aspect is often missing in our assessments, OPD assessment. आप दवाइयाँ खा रहे हैं? हाँ जी, खा रहे हैं. ठीक से खाई हैं? जी बिल्कुल ठीक. आपकी तबीयत कैसी है? जी पहले से भी खराब है. Now you're caught up कि यार ये मैंने तो दवाई लिखी है ठीक. ये नहीं आपने पूछा कि सारी दवाइयाँ खाई हैं, और सारी दवाइयाँ खाई हैं तो कौन सी खाई हैं, कौन सी उन्होंने अपनी मर्जी से बीच में से निकाल दी क्योंकि वो महंगी थी. So that aspect very important. The impact of the treatment on economics of an individual. How is economics influencing his choice, therapeutic choices that he is making? और बाज़ का लोग ये आपसे कहेंगे इम्पैक्ट ऑन जॉब के हवाले से, जो मैंने तो दवाई आपकी रात वाली तो नहीं खाई क्योंकि पहले दिन मैं दफ्तर खा के गया तो सारा दिन सोता रहा. मैनेजर ने बुलाया कहा तो भाई तय कर ले तूने नौकरी करनी है कि नहीं. तो फिर मैंने सोचा कि ये रात वाली दवाई मैं ना ही खाऊं तो अच्छा है. And this medication that you had given to this patient was mirtazapine as the only antidepressant that you had prescribed to this individual. And he had not taken it because he was getting sedated, the impact on the job. So functioning or risks आमतौर पर हम जरूर cover करते हैं OPD में. Impact on job and economics नहीं cover करते. That is an aspect that I thought is to be highlighted to all of you. Fourth color, therapeutic impact. Again, very nicely, you can use the same impact of 1 on 10 कि आप जब दवाई खाई तो
आपकी डिप्रेशन में कितनी कमी हुई, आपकी एंजाइटी में कितनी कमी हुई. You can use the same scale that I was highlighting as the PDS scale at that level. But please do ask about the side and the toxic effects of the patients. Now, remember, यहाँ पे जो crucial aspect मैं आपको highlight करना चाहता हूँ demonstration से पहले, वो ये है कि कुछ side effects patients experience करते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स उन्होंने, जो मैंने आपसे हमेशा कहा है, वो हजरत गूगल रहमतुल्लाह अलैह की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर साइड इफेक्ट्स उनके जहन में होते हैं. तो जो उनके जहन में साइड इफेक्ट्स हैं वो और हैं, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं वो और. So what you're interested in are the experiences of the patient as regard the ये वो मुझे पता है ना जी, ये जो दवाई है तो इससे फिर आदमी को पैल्पिटेशन भी तो हो जाती है ना, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. तो फिर वो मैंने सोचा कि आपने वेनलाफैक्सिन लिखी है तो मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया होगा ना, इससे बढ़ गया होगा. क्यों? वो मैंने पढ़ा था ना उसके ऊपर कि जी इसमें 10 डिग्री बढ़ जाता है वेनलाफैक्सिन खाने से बीपी. ये आपने चेक किया था? नहीं जी, वो तो मैंने सोचा कि बढ़ ही गया होगा ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, लेट अस सी if you have actually made a chart and you've demonstrated to me that 10-degree rise after venlafaxine has taken place. So perceived side effects versus experienced side effects. What you're looking for are experienced side and toxic effects rather than perceived possible side and toxic effects, which are important, but we'll talk about that in a little while. Now the fifth color is the importance of doing a physical examination. Now, sometimes what we think is that in a busy psychiatric OPD, there's no need to take a physical examination. No, sir. Very important. मैंने आपसे पिछली दफा भी अर्ज किया था, some of us who were there in that interaction, that patients come to doctors called psychiatrists because they think that these doctors are different from other mental health professionals in the sense that they look at the pulse, the blood pressure, the eyes, the body, and they know as much about it as any other doctor. So please do not defeat their concept by ignoring the physical examination. Right outside they would say, आपसे निकलने के बाद, जी भी डॉक्टर से मेरी तो उन्होंने नब्ज भी नहीं देखी. So and you would say कि यार नब्ज का क्या ताल्लुक है डिप्रेशन के साथ? नब्ज के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है डिप्रेशन का. लेकिन would you be able to say no to the fact that there are several SSRIs and tricyclic drugs, there are several antipsychotic drugs, anti-Parkinsonian drugs that can change the rhythm, the volume, and the frequency of the pulse? I'm sure the answer would be yes, they do. You and I know that there are several antidepressants and antipsychotic medications that you and I use which cause severe postural hypertension, dizziness spells, changes in the blurring of the vision, pupillary size changes that take place. So अगर आप ये इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि जो बंदा यहाँ पर आया इसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक डॉक्टर से मिलकर आया हूँ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आप रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर करें. इसका मतलब ड्रामा करना नहीं है. You know, sometimes I've seen doctors saying कि अच्छा लाइए जरा फिर नब्ज दिखाइए, और वो नब्ज जो वो देख रहे हैं वो एक्चुअली शायद कमीज का टेक्सचर देख रहे हैं rather than the artery called the radial artery. और उसने हाथ भी नहीं उधर रखा हुआ रेडियल पल्स के ऊपर, लेकिन वो शायद उनको ये बता रहे हैं कि वो गाना मैंने सुना हुआ है कि छड़वे मेरी वीनी ना मरोड़. So this is not what we are basically looking at. It's very important to understand that we are not talking about just हमारे यहाँ as expected बिगली चली है. So please ignore me for the darkness that you might have transiently been in. Very important aspect, physical examination covered as the fifth color, adjustments in medication and doses. Sixth color in outpatient assessment, do not prematurely adjust medication and doses. I'm sure you all have books on therapeutics, and in those books and therapeutics, it's repeatedly shown that when you start an SSRI or when you start a tricyclic, it takes a certain degree of time before it reaches the T50 or the therapeutic range after which it is going to be effective
for the patient. तो अगर वो 10 दिन के बाद आया और उसने आपको कहा कि मैं डिप्रेशन आपकी दवाई से ठीक नहीं हुआ, so do not feel compelled to change the medication. नहीं ये दवाई के बारे में जी तो वो तो मैंने सुना है कि ये अच्छी नहीं होती, इससे आदत पड़ जाती है. So instead of educating, मैं था दूजी दे देना. So you're not here to promote some other agenda. You're here to highlight specifically the reasons why you would adjust medication. An adjustment of medication is based on algorithms that you follow according to the treatment guidelines. So we follow those algorithms seriously. They are not to be learned for examination. They are to be implemented on the patient. तो आपने दवाई की adjustment for an antidepressant, the minimum duration of treatment is 6 weeks. इस दौरान में आप उनकी डोजेज जरूर एडजस्ट कर सकते हैं कि 15 डेज के बाद एक आदमी 10 मिलीग्राम डोज के ऊपर आए और वो नहीं इंप्रूव करा तो यू कैन गो ऑन अ हायर डोज, लेकिन उसकी दवाई ही चेंज कर दी है विदाउट गिविंग हिम द ड्यू ट्रायल, वो इट इज काउंटर प्रोडक्टिव. एंड इफ यू थिंक एज द लास्ट कलर दैट यू कैन सेंड आउट अ पेशेंट ऑफ अ साइकियाट्रिक ओपीडी विदाउट टेलिंग हिम कि अगर उसको कोई इमरजेंसी हो तो वो कहाँ जाएगा, किससे राब्ता करेगा, तो ये गड़बड़. आपको पता है psychiatric patients for several reasons can get into an emergent situation, both in terms of their disease as well as the medication that they are on. There could be an overdose situation, there could be a pathological reaction, there could be a drug reaction, there could be a rash, there could be a sudden paralytic ileus taking place on account of a medication. And if they do not have an emergency contact, you're likely to lose them. Sometimes you can lose in terms of their life, but otherwise to your profession, just because you did not tell them emergency में उन्होंने क्या करना. जाते हुए उनको ये जरूर बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, ये नंबर है, इस पर डायल कर सकते हैं, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इस जगह के ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इस डॉक्टर से आप राब्ता कर सकते हैं, फलां जगह पर आप जा सकते हैं. तो एक इमरजेंसी के लिए उनका कॉन्टेक्ट जरूर होना चाहिए साइकियाट्रिक पेशेंट का, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. हमारे मुल्क में लेडीज जेंटलमैन पीपल आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट परहेज. तो अगर जाते हुए बाहर मरीज की अम्मी ने पूछा कि डॉक्टर ने परहेज क्या बताई है, और आपने उसके मरीज ने उससे ब्लैंक लुक दी और कहा कि उन्होंने कोई भी परहेज नहीं बताई, शी इज लाइकली टू देन ऐड to the list of pareses that she has in mind given to her over last 700 years by her tribal roots. So that might have some interactions with the medications that you have given, the kind of pareses that the mother is likely to give. Parehez zarur bata dijiyega, I'll demonstrate to you in a minute. यहाँ मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि ये सारे 7 कलर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, if you can very quickly put them on a little piece of paper, take a printout and just put it on the table. एक शीशा आमतौर पर OPD में रखा हुआ होता है आपकी टेबल के ऊपर, उसके नीचे से स्लाइड कर लीजिए. And while you're interacting with your patient, ऐसे अगर आप एक दफा नजर उठा के इसकी तरफ देख लें तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में एक पगडंडी बन जाएगी इन 7 कलर्स की. And then it will be very difficult for you to ignore or forget one of the colors. आपको याद रहे था रेड कर लिए, मैंने ऑरेंज रह गया, येलो तो मैंने किया ही नहीं है, अच्छा पर वो इंडिगो रहता है यार, वायलेट वो इधर पीछे इधर वापस आई, वो मैंने आपको परहेज नहीं बताई, वो मैंने बताना बड़ा जरूरी. So this वापस बुलाना at that time and highlighting the परहेज or the emergency contact as the last violet color of the rainbow of possible things that you need to do is very, very important. I would fail in my duty if I do not highlight to you the importance of asking these questions before a patient has left. साफ ज़ाहिर है कि ये जो सवाल मैंने आपके सामने 6 questions रखे हैं, ये 6 questions जरूरी नहीं कि हर दफा करने पड़े, जरूरी नहीं कि हर दफा इंपॉर्टेंट हो, हर मरीज में ये सवाल इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये अगर आपके जहन में कहीं फ्लोट कर रहे हो, अगर आपके सामने नहीं है, तो आई थिंक ये आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे जिंदगी में. सो डूज मैंने आपको बता दिए, डोंट्स आपके सामने लिखिए. पहला, कोशिश करें कि जिन मरीजों को आप ओपीडी में देखते हैं उनको आप ही देखा करें. So if there is a system in your organization where you are working or getting trained, or following up on your own set of patients that you start to see, it's an excellent system rather than
a setting in various hospitals where each time a new person is sitting in the clinic. So clinics numbered हैं 1, 2, 3, 4. जो अंदर 1, 2, 3, 4 में डॉक्टर है वो हर दफा चेंज हो जाता है. So मरीज कहता है जी मैं एक नंबर में जाऊंगा, जो बंदा मिलेगा उससे बातें कर लो. So if you can have them clinics named after doctors, even when they are trainees, like the consultant is fixed for a patient, if a trainee is also fixed with the patient, you are likely to break more ice and have better therapeutic results if patients have their dedicated doctors. हाँ, ये जरूर है कि अगर एक patient आपके साथ ठीक नहीं हो रहा और problem हो रही है, तो you can always ask your colleague for help, or you refer to a senior person that same period. Take that patient to higher level in the hierarchy, to your assistant associate professor or head of the department, and take help. But to match patients with doctors, they know who their doctor is very important. Is continuity of care and assigned mental health professional. मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो भी लिंक्ड अप हो पेशेंट्स के साथ. पर अगर ये नहीं हो सकता और थोड़े हैं और सारों को इस तरह से नहीं कांटेक्ट किया, तो एटलीस्ट द ट्रीटिंग डॉक्टर एंड द पेशेंट मस्ट हैव अ कंटिन्यूटी ऑफ केयर फिनोमेना. सार्वजनिक इमरजेंसीज में तो ऐसा नहीं हो सकेगा, बट अगर आपको ये पता होगा इमरजेंसी में जब वो मरीज जाएगा तो इमरजेंसी में जाके वो आपका नाम बताएगा एंड द इमरजेंसी डॉक्टर कैन गेट इन टच with you. I can't emphasize it enough. Advantages to the patient and advantages to you as a mental health professional of continuing to see the same patient throughout his therapeutic alliance with the service. How important that is, and what good things can happen as a consequence. How many lives you will be able to save if the patient has a continuous ongoing relationship with a doctor or a mental health professional. Have you missed perusal of records, lab and psychometric reports that you had requested for the last time? It's an important question to ask. आजकल हम टेस्ट लिख देते हैं लोगों को, जब वो वापस आते हैं उनसे पूछते नहीं होगा तो शायद इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं थी. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपने टेस्ट लिखे थे तो फिर वो जरूर जरूर लीजिएगा और उनके रिकॉर्ड को अपने उस कागज के ऊपर एंटर कीजिएगा. होगा ये कि हो सकता है कि वो बाद में आपके लिए वो records available now, वो टेस्ट भूल है. So particularly the positive findings of a lab or a psychometric report or an important aspect from the previous records is extremely important to be entered on the clinical notes, on the page that you're using where you're making the records, or the computer where you're making the recording of the patient's data. Those positive tests are very, very important, or the important negative tests are very important. Have you asked the individual about treatment adherence, implementation of recommendations and instructions that you had made the last time? Have you? आपको बड़ी बड़ी सरप्राइजेस मिलेंगी. हाँ जी, वो मैं दवाई तो खाई थी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कही वही खाई, लेकिन मैं आधी गोली खाता था बजाय पूरी के. क्यों? मैंने सोचा कि फिर इस तरह ये है ना कि फिर मैंने सोचा कि आपके पास 15 दिन की बजाय महीने बाद चले जाऊंगा अगर मैं ये गोलियां महीना चला लूं. तो मैंने महीना चलाई और फिर मैं महीने के बाद आया. सो दीज लिटिल आपकी जो रिकमेंडेशंस की क्लैरिटी थी, जो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपने पीछे डायग्राम बनाया था, ये आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस को एंश्योर करेगा. हैव यू फॉरगॉटन टू रूल आउट ऑर्गेनिसिटी, particularly in a patient who comes back to you and says that he's not doing well with your treatment? So the two most important causes when patients come back to you after the due therapeutic time period that is required for a medication or intervention to work, 4 weeks, 6 weeks हो गए and the patient has not responded, you have increased the dose, the patient has not responded. दो चीजें हमेशा ये ध्यान में रखिएगा: treatment adherence, misdiagnosis. And first thing in the misdiagnosis is organicity. Organicity, very important. And organicity includes drug abuse, drug interactions, and I'll talk to you about that in a minute. And have you missed psychological trauma? Psychological trauma continues to haunt you because you have not taken the history
when you will see कि एक इंडिविजुअल को आप पिछले 3 महीने से ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी दवाइयां बढ़ाई जा रहे हैं, नई दवाइयां डाली जा रहे हैं और वो बेहतर नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा कि वहां एक और चीज इंपॉर्टेंट होगी है. पहली थी ट्रीटमेंट एडेरेंस, दूसरी थी ऑर्गेनिसिटी, फिजिकल डिजीजेस, एंड इंशाल्लाह वी विल डू a session with you of the important medical conditions that you must always keep in mind in OPD assessment: misdiagnosis and psychological trauma. ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में जरूर ज़हन में रखिएगा. 2 दवाइयां आजकल जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं मरीज बिकॉज दे हैव फिजिकल सिम्टम्स. फर्स्ट इज एंटासिड्स, द अदर इज H2 ब्लॉकर्स. वो जी गैस उठती सी तो फिर मैं सोचा कि नाल में रात में एक नेक्सम भी खा लेना. चलिए, ये किसने दी थी? वो मामू आए थे, उन्होंने कहा मैं भी खाता हूँ तो एसिडिटी की वजह से, तो वो मेरे लिए भी छोड़ के 10 गोली. तो you know what SSRIs and tricyclics do to H2 blockers and what H2 blockers do just in terms of not interaction at the liver level, just at the absorption level, pharmacodynamics and pharmacokinetics. The drug interactions start to take place, and even the placebos. मैं भी फिर नाल B complex या आयरन की गोलियां भी खा रहा हूँ. तो आयरन की गोलियां जो खा रहे हैं वो by they serve as chelating agents and for many medications that we use in psychiatry, and they're never absorbed. So to have that, have you covered that? It's an important thing. जो चीजें आपने हर सूरत में आजकल OPD में करनी है वो is to measure the BMI of patients, particularly if they are on drugs that change BMI. Extrapyramidal symptoms जरूर चेक करने हैं, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कौन से एक्सपीरियंस सिम्टम्स एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं. पोस्टल हाइपोटेंशन जरूर चेक करनी है, वो फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे कर सकते हैं. प्यूपल जरूर देखिएगा, बिकॉज प्यूपल एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत कुछ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताती है, एंड इज एक्सेसिबल राइट इन फ्रंट. So if you have a torch, और टॉर्च नहीं है तो अपने मोबाइल से, आजकल मोबाइल में टॉर्च है, या फिर फंडोस्कोप से आप उसकी प्यूपल जरूर चेक कर लें. आइडियली तो फंडस भी चेक करना चाहिए, बट हर दफा नहीं करनी चाहिए. आप हर वक्त फंडोस्कोपी करने की जरूरत नहीं. प्यूपल जरूर देखिएगा. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एट डिस्प्ले पार्ट बॉडी में प्यूपल साइज है. अगर किसी आदमी के अंदर डायलिटेशन हो रही है, सो दैट मीन्स के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? Yes, the cholinergic influences and the adrenergic influences are not in balance. Atropine-like effects के लिए enhance हो जाएगा, और अगर कोई cholinergic activity हो रही है तो constrict कर जाएगा. तो बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा of the receptor activity of the brain if you keep looking at. Knee jerk is an excellent simple reflex to do in OPD very easily. It tells you about anxiety, but it also tells you about overdoses, SSRIs and tricyclics. Anxiety के अंदर भी exaggerate करते हैं और overdoses के अंदर भी exaggerate करते हैं. If you're giving more than what the patient requires, you would find them having a very sharp exaggerated knee jerk. बचिएगा जरूर from premature adjustments of choice of drugs and doses of medication. ये डर के दवाइयां डोज कम कर लेना, डर वो भी मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है, बगैर असेस किए हुए कोई साइड इफेक्ट की तरह से दिया था. So these are those things, ladies and gentlemen, that I thought I'd highlight to you about your outpatients. बहुत मैंने तकरीर कर ली आपसे, बहुत तफसील से बात हो गई इन चीजों के ऊपर. I'll be very happy to take questions for the next 5 minutes before we go on to the demonstration of some of these skills to you. So over to you all. मैं ये स्लाइड से निकल के आपके पास आ जाऊंगा, and you can write on this chat if you have any questions on what I have said so far. याद रखिए, ये जो जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, अभी मैं एक आउट पेशेंट सेटिंग में इनकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके लिए करूंगा. ये मत ख्याल कीजिएगा कि ये हो नहीं सकता सारा कुछ जो मैंने आपसे कहा है. फील फ्री. Ideally speaking, for a new patient, fundoscopy is a test that I personally very strongly recommend. But after you have learned fundoscopy, ये सवाल था अभी क्या फंडोस्कोपी हर न्यू पेशेंट में करनी चाहिए? जी हाँ, करनी चाहिए, लेकिन
एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाली फंडोस्कोपी नहीं करनी चाहिए. वो फंडोस्कोपी जो आपने सीखी हो बाकायदा किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, वो फंडोस्कोपी करनी चाहिए. It tells you a lot about raised intracranial pressure. It tells you a lot about diabetes. It tells you a lot about hypertension. It tells you a lot about atrophies of various kinds taking place. Frontal lobe tumors. पता नहीं क्या क्या information आपको अच्छी फंडोस्कोपी करा सकती है. नए केस में फंडोस्कोपी I would very strongly recommend that you do after having learned it. It usually takes 2 or 3 days of interaction with a seasoned ophthalmologist जो आपको सिखा देगा कि फंडोस्कोपी कैसे करते हैं. उसके बगैर नहीं कि यानी उसकी लाइटें दिमाग में मारी जाने, उसको कौन सा पता लग रहा होता है फंडोस्कोपी में कि आप देख रहे हैं या नहीं कर रहे. तो वो ना कीजिएगा. प्रॉपर फंडोस्कोपी इज क्रूशियल और वो जरूर कीजिएगा. गोल्डन मिनट के बाद अच्छा जी, गोल्डन मिनट सिर्फ इतनी है कि जब मरीज आपके पास आके बैठता है डॉक्टर साहब, उसको 1 मिनट दीजिएगा बगैर कुछ कहे सुने. उसको 1 मिनट दीजिए जिसमें कि वो आपकी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सके जिसमें वो आके बैठा है, जिसका मैं अर्ज कर रहा था कि वो बात बड़ी डॉन्टिंग होती है. और दूसरा, आपको भी मौका मिल जाता है कि आप यू कैच योर ब्रेथ फ्रॉम द लास्ट पेशेंट. वो एडजस्ट कर रहा होता है उस 1 मिनट में, आप भी एडजस्ट कर रहे होते हैं एंड यू आर सेटलिंग डाउन इन दैट 1 मिनट. दोनों के बेनिफिट में. दूसरा, उसका मकसद जो इनिशियल मिनट का होता है कि आपकी मरीज की तरफ गौर से देखते हैं और उसको चांस देते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करे. आप उससे पूछने की बजाय कुछ चांस उसको मिल जाता है कि वो अपनी पसंद का एरिया पहले आपके सामने रख सके. वो हो सकता है आपके ओपीडी के बारे में कुछ शिकवा करना चाहता हो. वो हो सकता है आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं मरीज को अंदर लाने के, उसके बारे में कोई बात कहना चाहता हो सकता है वो एक ऐसा मौजू आपके साथ डिस्कस करना चाहता हो जो कि उसको मौका नहीं मिला था पिछली दफा बात करने का. So it is actually trying to put the ball in the court of the patient that he does the service in a tennis match rather than you starting and winning the toss and deciding what you want to serve him for. So it's that 1 minute that we call the golden, holy first minute in a psychiatric OPD. I hope that answers your query, Dr. Sabat. Psychologists, do clients, patients in Pakistan expect you to do a physical? Certainly not. देखिए, आप जिस चीज के लिए ट्रेंड ही नहीं है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो मैंने चूंकि ट्रेनिंग रन की है साइकोलॉजी की, तो मुझे अंदाजा है कि आपकी ट्रेनिंग तो नहीं हुई होती, तो एवं उसका ड्रामा ना करिए. मैंने देखा है बाद साइकोलॉजिस्ट बीपी ले रहे होते हैं मरीज का क्योंकि वो फिजिकल असेसमेंट, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. प्लीज ये ना कीजिएगा. वी आर नॉट हेयर टू प्ले गेम्स विद आवर पेशेंट. हम तो उन्हें सिखाते हैं कि खेल नहीं खेलने हैं अपनी जिंदगी में, आप ड्रामे ना करें. ड्रामों की टर्मिनेशन हम सिखाते हैं लोग. अगर हम खुद ही अपने क्लिनिक में बैठ के ड्रामे शुरू कर देंगे तो फिर लोग हमें क्या कहेंगे. तो ये नहीं, आप उनको बहुत आपसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट का फर्क नहीं समझते. साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब को साइकोलॉजिस्ट समझ रहे होते हैं. मेरे साथ रोज ही होता है. तो इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं. मुझे अगर कोई साइकोलॉजिस्ट कहता है हाँ जी, मैं कहता हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, उतनी मुझे साइकोलॉजी नहीं आती, लेकिन मैंने थोड़ी सी पढ़ रखी है. तो इस तरह आप ये कह सकते हैं उनको कि देखिए मैं उस तरह से फिजिकल डॉक्टर नहीं हूँ. अगर मैंने पीएचडी भी की हुई है तो उसके लिए मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है मेरी पीएचडी की वजह से, और मैंने ट्रेनिंग नहीं ली हुई ब्लड प्रेशर लेने में और फिजिकल एग्जामिनेशन में. हाँ, मैं आपको अपने कॉलीग के पास भेज देता हूँ अगर मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर किसी बीमारी का कोई रोल हो सकता है जिसमें ब्लड प्रेशर चेंज हो जाए, तो आप डॉक्टर साहब से मिल लीजिएगा. वो मेडिकल ऑफिसर भी हो सकते हैं, जीपी भी हो सकते हैं, जिनके पास आप उन्हें रेफर कर दें. बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल असेसमेंट बाय अ साइकोलॉजिस्ट. A collateral from the family if they are available on a follow-up assessment or only if required. देखिए, particularly मैं समझता हूँ as a psychiatrist, family is a huge resource for you of information. If you have access to the family and patient is okay, never miss on taking data from the family. Never. But idea ये है कि start वहाँ से ना कर, supplement है. फैमिली का डेटा जो आपको वो दे रही है क्रूशल है, वाइटल है, कभी इसको मिस ना करें. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कन्विंस करने की कोशिश करें मरीज को कि देखिए मैं आपकी फैमिली से बात करना चाहता हूँ, आपकी शिकायतें लगाना नहीं,
آپ ان کی شکایتیں سننا نہیں, لیکن اس سے مجھے آپ کی مدد کرنے میں آسانی ہوگی. اور دوسرا ریزن وائی یو مسٹ آلویز ہیو اے فیملی کمنگ over and talking to you is you can make it into an alliance. میں یہ جو ہم نے نام رکھا ہے The Healing Triad, یہ آپ کو انٹرسٹ کرے گا سہر, کہ ہم نے The Healing Triad جب رکھا تھا نام اپنی آرگنائزیشن کا, جس کے فورم پر ہم یہ بات کر رہے ہیں آج, تو اس میں کون لوگ تھے ہیلنگ ٹرائب میں؟ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, دا پیشنٹ اینڈ ہز فیملی اور کمیونٹی. یہ ہولی ٹرائیڈ ہے, ہیلنگ ٹرائیڈ ہے. تو ہیلنگ ٹرائیڈ میں فیملی ان سائکیاٹرک پیشنٹس, ان سائکیاٹرک اینڈ سائیکو سوشل ایشوز از ایبسلیوٹ پارٹنر اینڈ اے اسٹیک ہولڈر. آپ سکسیس حاصل ہی نہیں کر سکتے سائیکائٹری میں اگر فیملی آپ کی طرف نہیں ہے, اور مریض آپ اور فیملی ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. بہت بڑا پارٹنر ہے. Thank you for asking this question. Very, very important that you engage the family, particularly in Pakistan. آپ آج کل پاکستان میں نہیں ہے مجھے پتا ہے تو, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے فیملی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کو پارٹیسپیٹ کرانا ٹریٹمنٹ میں, they can be huge resource that you must always capitalize on if you can. ہم یہاں رک جاتے ہیں, میرے خیال میں پھر سوالوں کا سلسلہ بعد میں بھی کر لیں گے. تو اب میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا ذرا ڈیمونسٹریٹ کر لیں آج کی گفتگو کی. ہاں, یہ بھی ایک ایتھیکل سوال ہے کہ پھر گھر والے جو باتیں ہیں, سہر نے پوچھا ہے کہ پھر آپ مریض کو باہر نکال کے ان کی باتیں سنیں یا پھر ان کے سامنے ہی سنیں. اکثر جو میں نے دیکھا ہے بڑا انٹرسٹنگ فینومینا فیملی کا, کہ وہ آ کے نا مریض کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, تو پیچھے بیٹھ کے نا تو وہ پھر آپ کی اٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو اشاروں سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کھانا نہیں کھانا ڈاکٹر صاحب, تو بتا رہے ہوتے ہیں اشاروں سے, آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے آپ کی اور فیملی کی جو کہ ہم نے شروع کرنی ہے انفارمیشن حاصل کرنے کی. جاسوسی کرنے کا آپ کو پتا ہے ہماری قوم کو بہت زیادہ شوق بھی ہے اور مزہ بھی بڑا آتا ہے ہمیں جاسوسی کرنے کا. تو جاسوسی کی داستان نہیں ہے جو کہ میں نے اور آپ نے شروع کرنی ہے مریض کے خلاف. انکریج کرنا ہے فیملی کو ٹو ٹاک ان فرنٹ آف دا پیشنٹ, اور انکریج کرنا ہے پیشنٹ کو اس کا پرمیشن لے کر کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کرنے لگے شاید آپ کو تلخ لگے گی, شاید آپ کو لگے گا آپ کی شکایتیں لگا رہے ہیں. نہیں, اس کو شکایت لگانا مقصد نہیں ہے. مجھے آپ کی مدد کرنے میں یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ میں اس زمانے میں آپ کے پاس نہیں تھا, یہ ساتھ نہیں تھا جس وقت یہ ساتھ تھے, اس لیے یہ کوئی انفارمیشن مجھے دیں گے آپ کی اجازت سے. If you are able to convince the patient to let the family talk in front of the patient, always preferable, always preferable. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو باہر بھیج دیں, پھر میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی. یہ جو ذرا انداز ہے یہ لاجیکلی اور ایتھیکلی ناٹ ریکمینڈیڈ. We would encourage family to be part of the triad. You cannot complete the triangle with one of the pieces of the triangle outside and the other two sitting here trying to complete the triangle, which they will never be. The healing triad, the healing triangle is when all three work together like this, and that is what we are trying to encourage. Okay, so let us stop here the question and answer session and do a 10 minutes interaction with a patient who has come back after she was diagnosed with depression, moderate, and was placed on an SSRI. تو اب مجھے پتا نہیں کہ آپ کو یہ کرسی نظر آ رہی ہے, یہاں رکھیں, کوشش کرتا ہوں اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر لیں. میری کرسی شاید آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ نظر آ رہی. تو اگر تو ماسک کا زمانہ ہے, ماسک پہن لیا جائے تو اور بھی اچھا ہے آج کل او پی ڈیز میں. I'll try and do that. Or it will also be a good idea to actually keep a mask for these days in corona times. Keep a mask for your patient as well. اگر وہ نہیں آئے ہوئے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جو مریضہ ہیں وہ بھی نہیں پہن کر آئی ہوئی ماسک, تو آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں. اس میں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات لوگ اس بات پر افینڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو ماسک بنانے کے لیے کہہ دیا ہے. شاید
दूरी फील करते हैं तो वो फिर 1 मिनट उस पर भी लगाना पड़ेगा. लेकिन आजकल हम इनकरेज करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें 6 फीट वाली, और साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए आप उनको मास्क भी तजवीज़ करें. वह अस्यूम कर लें कि हमने ये दोनों काम कर लिए, और चूंकि द पेशेंट इन क्वेश्चन इज समबडी दैट आई नो, एंड आई नो दैट शी इज कोविड नेगेटिव, एंड आई एम आल्सो कोविड नेगेटिव लकीली. सो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन नाउ दैट सो दैट यू कैन हैव अ better feel of the interaction, I took them away and ask this interaction. आइए जी प्लीज तशरीफ लाइए, बैठे जी. जी अस्सलाम वालेकुम. आप कंफर्टेबल हैं? जी. क्या सिलसिला चल रहा है आपके यहाँ आजकल कोरोना का आपकी तरफ? बस कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई मास्क वगैरह कोई नहीं पहन रहे, लेकिन अच्छा. मुझे तो पता नहीं है, मैं तो घर पे ही रहती हूँ. आप चाहें तो मास्क पेपर से अवेलेबल है? नहीं, मेरा दम घुटता है. अच्छा, तब ये आपको पता है ना, हिफाजत के लिए हमने रखा हुआ है. जी जी. लेकिन मुझे नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जाती तो अच्छा कुछ हुआ नहीं होगा मुझे. अच्छा, आप चुके बाहर नहीं जाते. जी बिल्कुल ठीक. तो ये आज हमारी जो गुफ्तगू आपके साथ होने वाली है, ये इस सिलसिले में है कि आप तशरीफ लाई थी हमारे पास 15 दिन पहले, और हमने तशखीस किया था डिप्रेशन. तो उसके बाद से अब तक की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करना चाहेंगे आज. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा चीज़ों पे. अभी भी मुझे नींद नहीं आती. मैं रात को उठ जाती हूँ, बीच में एकदम से मुझे कुछ होता है, मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं बैठी रहती हूँ या मैं फिर फ़ोन पे लग जाती हूँ. मैंने गूगल किया था तो उससे मुझे पता चला था कि बाल भी गिरते हैं उससे, तो वो भी मुझे परेशानी हो गई. देख रहे हैं आप, मैं अभी भी तेल लगा कर आई हूँ आपके सामने, बाल उतने नहीं रहे. और गले में और मुंह में एक खुश्की सी हर वक्त मुझे प्यास लगती रहती है. समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है. दिल नहीं कर रहा डॉक्टर साहब बस चेंज कर दें इस दवाई को, बिल्कुल बस हो गई, नहीं कर सकते. ठीक. तो मुझे आपकी बातों से ये समझ आई है कि एक तो आप आजकल अपने वो जो कोविड के हालात हैं उसके हवाले से भी तंग हो रही हैं, जो लोगों के रवैये उनके हवाले से भी, और खुद आप भी तंग हो रही हैं. और डिप्रेशन की जो हमने तशखीस की थी पिछली दफ़ा, और उसके नतीजे में जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ और कैफियतें तब्दील हुई थी, आपकी जिस्मानी सेहत की, आपकी घरेलू जो सूरत हाल थी उसके हवाले से, जो आपकी ग्रूमिंग थी उसमें भी कुछ जो तब्दीलियाँ उसी डिप्रेशन की वजह से आई थी, उनमें कोई बेहतरी फिल्मों नहीं आई. तो हम आमतौर पर इसके लिए एक तरीक़ाकार ये इख्तियार करते हैं कि एक सादा से तरीके, ताकि वो मैं और आप उसको कागज़ पर भी नोट कर लेंगे, और हमें ज़रा ज़्यादा आसानी से बाद में फॉलोअप में भी आसानी रहेगी कि हम उसको इस तरह से देखते हैं कि मैं आपके ऊपर जो एक फ़र्द की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक सफ़रर की हैसियत से प्रॉब्लम की, उसमें जो तब्दीली आई है, जो आपकी बीमारी थी डिप्रेशन की, उसकी जो अलामात की कैफियत थी, और उसके अलावा फिर जो आपकी ज़िंदगी की कैफियत थी, आपकी घरेलू ज़िंदगी की, आपकी अपने बच्चों, बाकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन के हवाले से, आपकी समाजी ज़िंदगी थी उसके हवाले से जो तब्दीलियाँ डिप्रेशन की वजह से आई हुई थी, 15 दिन के इलाज के बाद उनमें
क्या क्या फर्क पड़ा है। तो हम उसको इस तरह से मेजर करते हैं कि हम 1 से 10 तक के स्केल में ये समझते हैं कि जब आप तशरीफ लाई थी हमारे पास, तो अगर उस वक्त आप 8 या 9 पर थी शिद्दत के हवाले से, तो अब 15 दिन के इलाज के बाद 1 को हम सेहत मानते हैं और 10 को बहुत शदीद कैफियत मानते हैं। तो 8 पर अगर उस दिन थी, तो आज आप कहाँ अपने आप को महसूस करती हैं, कैफियतों के हवाले से भी, डिप्रेशन के हवाले से भी जो आपकी तशखीस थी, और ख़ुद आप एक इंडिविजुअल के तौर पर भी अपने आप को तीनों पर अगर मुझे गेज करके बताएंगे तो फिर मैं यहाँ नोट कर लूँगा अपने सामने। 7 ये हर चीज़ में 7। तो यानी कि अगर हम शिद्दत के हवाले से उस वक्त 24 समझें, तो अब आप 21 पर आ गई हैं टोटल स्कोर के वजह तीनों को अगर हमने 10-10 नंबर दिए, तो हम ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ मस्बत, कुछ जो एक घबराहट सी थी वो थोड़ी कम हुई, थोड़ी। अच्छा, आपको याद होगा आपने हमसे जिक्र भी किया था, ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है आपके सामने, आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया भी था, नींद में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, उसके बारे में मुझे बताएं, नींद पर क्या असर पड़ा है? नींद वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि पहले भी नहीं नींद आती थी और अब भी नहीं आती। दोपहर में मैं सो जाऊंगी, अगर मैं सोऊंगी, अगर मुश्किल से नींद आ गई तो दोपहर में सो जाऊंगी। तो रात की नींद नहीं अच्छी, मैं सोती हूँ तो एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आती है, अगर सो गई तो फिर उठ जाती हूँ बीच में। और उठ के क्या करती? फिर कुछ कर लेती हूँ, फोन देख लेती हूँ, अक्सर कोई इंस्टाग्राम, आजकल तो यही है। फिर दोबारा कितनी देर में नींद आ जाती? फिर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बस ऐसे ही। खाने पीने के जो मामूलात हैं उसमें कुछ फर्क है? खाना कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार बहुत भूख लगती है कि हर चीज खा लूं, 4 डब्बे बिस्किट के खा लूं, इस तरह होता है। और कभी कभार बिल्कुल भूख नहीं लगती कि कुछ नहीं खाना, तो दिन पूरे नहीं खाऊंगी। फिर कभी कभार एकदम से होगा। पिछली दफा भी हम जब बात कर रहे थे, थोड़ी सी मुश्किल आपको पेश आई थी सवाल का जवाब देते हुए, लेकिन फिर भी आपका डॉक्टर हूँ, ये पूछना पड़ता है, आपकी जो अपने हस्बैंड के साथ जिंदगी जिनसी तौर पर गुजरी, उसके हवाले से आपने मुझे बताया था कि ये आपके नोट्स में भी हमने थोड़ा सा इसका इशारतन जिक्र किया हुआ है कि सेक्सुअली डिप्रेशन ने मुतासिर किया था आपकी निजी जिंदगी को। तो अब इस हवाले से क्या सूरत है? वैसे वही हाल चल रहा है, कोई तब्दीली उसकी नहीं, ना बेहतरी ना खराबी, वैसे ही चल रहा है। और क्या ही खराब होगा इससे ज्यादा। मैंने आपसे पिछली दफा ये भी पूछा था कि कभी बाज़ वक़्त ये होता है कि डिप्रेशन की वजह से इंसान नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है अपने बारे में, तो आपने पिछली दफा इसका जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा डॉक्टर साहब? मैं जिंदगी के नुकसान के बारे में, खुदकशी के ख्यालात आने के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं आ रही जी। नहीं। तो ऐसा तो नहीं नोटिस किया, बाद लोग जब हम ये दवाई स्टार्ट करते हैं ना, तो उन वाकया में बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया है, चीखना चिंगाड़ना शुरू कर दिया है, उनके अंदर थोड़ी सी गुस्से की शिद्दत ज्यादा हो गई है, बर्दाश्त कम हो गई। लेकिन कोई ऐसा ज़ाहिरा तो नहीं हुआ जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मतलब कभी कभार ऐसे होता है कि जब बर्दाश्त कम हो जाती है, दिन पे टाइम पे फर्क पड़ता है कि जब दिन होता है तो फिर बेहतर होता है, थोड़ी बर्दाश्त ज्यादा होती है। रात के टाइम मैं नहीं सुन सकती, ज्यादा गुस्सा आने लगता है, ज्यादा, बस चुप कर जाओ, दूर हट जाओ मुझसे, मत बात करो। ठीक। तो आपकी जो एज ए हाउसवाइफ जिंदगी में नोट किया हुआ है कि आप हाउसवाइफ हैं, तो उसमें जो कोप करने की कैपेसिटी थी आपकी, उस पे कुछ फर्क पड़ा है? ये जो आपने दवाई दी है, इससे दिल घटता है और जो इससे कैफियत महसूस हो रही है उसकी वजह से बिल्कुल मुझसे काम नहीं होता। उस वक्त भी नहीं हो रहा था? उस वक्त भी नहीं हो रहा था और अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी और ज्यादा आप उसके अंदर खराबी कर रहे हैं। बाल जो गिर रहे हैं तो फिर मेरी परेशानी इतनी ज्यादा। दवाइयाँ आपको मिली थी अस्पताल से? कोई महंगी तो नहीं थी दवाइयाँ आपको लेने में? कोई ठीक थी डॉक्टर साहब, नो मनी इज नॉट एन इशू। ओके, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी वो दवाई आपको आसानी से अपने अस्पताल से मिली, बाजार से। बट इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक वी शुड चेंज इट। अच्छा,
ٹھیک. اچھا اب کچھ آپ بیچ میں جب اپنی پرابلم بتا رہی تھی تو آپ نے کہا کہ کچھ ایسے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں آپ کو, ان کا آپ نے ذکر بھی کیا, قابل برداشت ہے؟ پتہ نہیں کب تک, ابھی تو کر رہی ہوں لیکن کب تک کر سکتے ہیں. کون سے ایسی علامات ہیں جو آپ کے لیے بالکل قابل برداشت نہیں ہے دوائی کے سائڈ افیکٹس کے؟ یہ جو منہ میں ڈرائنس ایک ہو رہی ہے وہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی, اور اب پرسوں سے مجھے کانسٹیپیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ نون سائڈ افیکٹس ہیں آپ کی اس دوائی کا. میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پر یہ جو منہ سوکھ رہا ہوتا ہے اس کی منہ سوکھنے کی جس طرح سے ہم ہینڈلنگ یا مینجمنٹ کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں کر رہے ہوتے. مثلا آپ سے اگر میں پوچھوں گی جب آپ کا منہ سوکھتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں, تھوک جمع کر کے نگل لیتی ہوں اس کو یا پانی پی لیتی ہوں. تو یہ پانی پینے کا جو طریقہ کار ہے یہ کتنا, ایک گھنٹے میں آپ کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں نہیں, اس طرح کون بار بار پانی پیے؟ آپ نہیں پی. تو اس پر ذرا غور کر لیجیے گا کہ پانی وقفے وقفے سے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے وقفے سے پیجیے گا. جب آپ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ جب منہ سوکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی ٹھنڈا پانی لے کر پینا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھنڈا پانی پینے سے جو تھوڑا سا لعاب منہ میں ہوتا ہے وہ بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے اور منہ اور زیادہ سوکھ جاتا ہے. تو اگر آپ وقفے وقفے سے پانی پئیں, روم ٹیمپریچر کے اوپر یا جو ٹیپ واٹر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پر پئیں گی. دوسرا یہ کہ بعض کا اگر آپ چیونگم منہ میں رکھ لیں یا سونف الائچی منہ میں رکھ لیں تو اس سے بھی منہ سوکھنے کی کیفیت کم ہو جاتی ہے. کانسٹیپیشن کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے, کیا آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ کانسٹیپیشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ نہیں جا پا رہی باتھ روم, بس ایسی بلوٹنگ سی ہوئی ہوئی ہے اور درد سخت پیٹ ہے. اور وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 دن, مطلب ابھی تو 3 دن ہی ہوئے ہیں مجھے, تو میں 3 دن سے میں نہیں گئی. 3 دن سے نہیں گئی. تو اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کا نون سائڈ افیکٹ ہے. میں ابھی آپ کو ایگزامن بھی کروں گا تو اس میں بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی آنتوں کی موومنٹ کیسی ہے. آنتوں کی موومنٹ بعض اوقات سلو ہو جاتی ہے دوائی کے ساتھ, کم ہو جاتی ہے. اس سے ایسا ہوتا ہے اگر ہم ڈائٹ کے اندر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس کر کے اور گوشت کم کر لیں, سفید میدے کی چیزیں کم کر لیں, اور سبزیاں سلاد یہ زیادہ کر لیں, لیگزیٹو سبزیاں لیگزیٹو پھل کھانے شروع کریں ہیں جو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو, اور جو چیزوں کی پرہیز ہے وہ بھی میں بھی آپ کو ضرور لکھ دوں گا. تو اس سے پانی کی مقدار بڑھانے سے بھی آپ کانسٹیپیشن بہتر ہو جائے گی. تو یہ ہم بالکل کر لیں گے. میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھ لکھ کے تو نہیں سوچ لیا کہ یہ والے سائڈ افیکٹ, اور پاس تک ہم گوگل پہ دوائیاں کی تفصیل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی کچھ چیزیں نہیں, میں کریٹ نہیں کر رہی, کوئی کریٹ نہیں کر رہی, وہ صحیح لکھا ہوتا ہے جب میں پڑھتی ہوں. ٹھیک. تو یہ دوائیوں کے چونکہ جسم پر بھی کچھ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں, تو کوئی باڈی میں آپ اپنی تبدیلی ایسی دیکھ رہی ہیں جس کو آپ چاہیں کہ میں ڈاکٹر کے سے ایگزامن کر لوں؟ بس کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے سانس پورا نہیں نکل رہا باہر, بس پھنس رہا ہے. سانس لینے میں, اندر لے جانے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے جی. اور کوئی ایسا حصہ؟ بس کبھی کبھار درد ہوتا ہے, کمر میں درد ہونا شروع. میں وہ والے ایسپیکٹس جو کہ اس دوائی کے حوالے سے بعض کا اثر انداز ہوتے ہیں ان کو ضرور سائڈ کرنا چاہیے. اس میں ہم 2-3 چیزیں دیکھ رہے ہوں گے آپ کی. ایک تو میں یہ جو آلہ استعمال کر رہا ہوں اس میں آپ کی پلس آ جائے گی, آکسیجنیشن آ جائے گی, اور یہ بھی طے ہو جائے گا کہ آپ کے بلڈ پریشر میں کوئی تبدیلی تو نہیں پیدا ہوتی. تو اس کو جب میں لگا کے کہوں گا تو روک کے ایک دفعہ ریڈنگ لوں گا, پھر آپ کو کھڑا ہونے کے لیے کہوں گا, آپ اسی وقت کھڑے ہو جائیے گا. پھر میں اس کو دوبارہ پریس کروں گا تو آپ کے بلڈ پریشر میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. جو بھی ہو رہا ہے تو میں اس کو چاہوں گا کہ آپ یہاں رکھ لیجیے, اور اس دوران میں آپ کو آسٹریٹ آگے سانس ٹھیک ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہاسپٹیٹ کر لوں. کیا یہاں رکھ لوں؟ رکھ. آپ آنتوں کا ذکر کر رہی تھی نا, تو آنتوں کے حوالے سے بھی مجھے آپ کو ایگزامن کرنا ہے. اور ذرا کریں
میں یہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا آپ کی آنکھ میں, اس سے مجھے کافی اندازہ ہوگا. اوپر دیکھیے, زبان دیکھیے, باہر ٹھیک ہے, میں کریے دھوپ نکلی. یہ بلڈ پریشر میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے آپ کی, لیکن وہ اتنی شدید نہیں ہے کہ اس سے کوئی دقت تکلیف پیدا ہو سکے. میرے خیال میں ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ ایک تو ہم نے جو رات کو آپ جاگتی ہیں اس کی تھوڑی سی سلیپ ہائیجین کا خیال رکھنا ہوگا. میں ایک یہاں پر سائٹ لکھ دوں گا جس میں سلیپ ہائیجین کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی. باہر ہماری ریسیپشن سے آپ کو سلیپ ہائیجین کے حوالے سے ایک کاغذ بھی مل جائے گا جس میں رات کو جب جاگ جائیں تو کیا کرنا ہوتا ہے. فی الحال میں اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی دوائی نہیں تجویز کر رہا جو سونے کی دوائی, ٹھیک ہے. بعض اوقات چونکہ یہ ڈپریشن کے ریکور کرنے پر خود بخود ٹھیک ہو جاتی, تو اس کی بھی تفصیل میں فی الحال کوئی دوائی نہیں دوں گا آپ کو سونے کی. لیکن میں آپ کی جو دوائی آپ کو ابھی مل رہی ہے اس کی ڈوز میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا. تھوڑے سے سائڈ افیکٹس ان کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہو جائیں. بعض اوقات اگر ہم دوائی بڑھا دیں یا تبدیل کر دیں تو نئے سائڈ افیکٹس شروع ہو جاتے ہیں. اسی کو اب تقریباً ہم 6 ہفتے ٹیسٹ کرتے ہیں اس دوائی کو کیا آپ کو کتنا تبدیل کرتی ہے. اس دوران میں آپ کو اپنی سائیکالوجسٹ کے پاس بھی بھیج رہا ہوں. بعض اوقات ہم ماڈریٹ ڈپریشن میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کی وہ تفصیل آپ سے بتائیں گے جو دوائی کے ساتھ مل کے زیادہ اچھا کام کرتی ہے. تو اس کا ریفرل میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کے یہ سائڈ افیکٹس بہت شدید ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے بہتر نہ ہو رہے ہیں, تو پرہیز تو میں لکھ ہی رہا ہوں اس کے اندر پرسکرپشن میں, تو پھر آپ اس کا زیادہ انتظار نہ کیجیے گا. اور ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ شام کو بھی کھلا ہوتا ہے, تو وہاں رابطہ کر لیجیے گا اور ان کو یہ بتائیے گا ضرور کہ آپ میری مریض ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مجھ سے رابطہ کر کے آپ کی بیماری. تو اگر ہم دوائی چھوڑ دیں اور میں صرف تھراپی کروں, ہاں بالکل یہ بھی ایک چوائس ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس وقت ہم دوائی اور تھراپی کو ساتھ ملا کے کرتے ہیں تو زیادہ اچھا افیکٹ آتا ہے اور آپ کی ریکور کرنے کے چانسز. لیکن اس کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے جی, دوائی کے بغیر میں نے آپ سے کہا کہ یہ چوائس تو آپ ہی کا ہے, لیکن عام طور پر جب ہم سائنسی معلومات کو ذہن میں رکھیں اور جو اسٹڈیز ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, تو جب دونوں کو ملا کے کیا جاتا ہے تو زیادہ اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. پرہیز میں اس کے اندر لکھ رہا ہوں, کانٹیکٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. میں یہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں کہ میں نے آپ کو جب بھی ایگزامن کیا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جسمانی ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ کوئی جسمانی بیماری تو ہم نے مس نہیں کر دی. تو میں 2-3 آپ کے ٹیسٹ لکھ رہا ہوں, ان کو آپ جب بھی رپورٹ آئیں آ کے انتظار نہ کر کیجیے گا 15 دن کا, وہ جیسی رپورٹس آئیں تو ہمیں آ کے دکھا دیجیے گا. یہاں میں ٹھیک ہو جاؤں جی, مجھے امید ہے, اور اسی امید پر کب تک, کچھ ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گی. جی, جو ہمارے اس وقت جتنے بھی فگرز آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 70% مریض جو ہے وہ امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ 6 ہفتے وہ ریگولرلی دوا کھا رہے ہیں. اور جب ہم سی بی ٹی بھی اس کے اندر شامل کریں گے تو اس کے امکانات اور بھی زیادہ. ٹھیک ہے, کوئی ایسا سوال, کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو جائے؟ خدا حافظ. Okay. Now, I don't know whether you have marked me or not, but it's about 12 minutes or so of interaction that took place. And then, of course, we got back to our discussion. Now, based on this interaction that I have had with my patient, demonstrating to you the 7 colors, I am absolutely sure that I would have missed some aspects that were coming to your mind. But even if you were broadly looking at those 7 colors and have visited them during this period of time of about 10 to 12 minutes in an outpatient setting with the patient, you would have done the trick. اور شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے ان چیزوں کو کرنے کو, جن کو شاید میں زیادہ تیزی سے اس وقت کر رہا ہوں, پر آپ اسے جب پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بعض پیشنٹس میں اس سے بھی جلدی اور بعض پیشنٹس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم کے ساتھ آپ اس کو 10 سے 12 منٹ میں آؤٹ پیشنٹ میں ضرور اسیس کر سکیں گے ایک مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن کے مریض کو. کچھ مریض ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ او سی ڈی کے مریض ہیں جو کہ ایک لمبی سی تقریر لکھ کے لائے ہوئے ہیں, کاغذ انہوں نے 3-4 پکڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ مریض ایسا ہے
جس کو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کے پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز اس طرح کی ہیں اور اس کے اندر سائیکو سوشل ایشوز بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے آپ علیحدہ ٹائم رکھ لیں. اس کو بتائیے کہ دیکھیے یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم لگے گا، میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ہمارے آؤٹ پیشنٹ کے فلاں کمرے میں انتظار کر لیجیے. میں جس وقت جو او پی ڈی میں زیادہ سیریس مریض ہیں ان سے دیکھ کے فارغ ہوں گا تو آپ کے ساتھ مجھے 20 یا 30 منٹ لگ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو وہاں انتظار کرنا چاہیے. یہ نہ کریں کہ آپ بہت لمبے لمبے زیادہ جو پرابلم والے پیشنٹس آپ کا انتظار کرتے رہ جائیں اور اس پیشنٹ کو آپ اتنا لمبا دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ اگلے 1.5-2 گھنٹے تک اس کے سائیکو سوشل ایشوز کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں. تو اس طرح کی ارینجمنٹ وہ جو ٹریاج میں نے آپ سے عرض کیا تھا او پی ڈی کا، وہ نہ کبھی بھولیے گا جس وقت آپ او پی ڈی میں ہوتے ہیں. تو جہاں ہم نے چیزیں مس نہیں کرنی وہاں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہم دوسری طرف نہ ار کر لیں کہ ان 7 کلرز کو پورا کرتے کرتے ہم پرابلم میں چلے جائیں اور دوسری طرف نکل جائیں اور بہت زیادہ ٹائم اس حوالے سے ویسٹ کریں. I'm going to stop here and take your questions on this assessment and any other areas that you would like to talk about with me. ہمیں یہ آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ او پی ڈی میں کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ 1-2 منٹ کے اوپر آپ مریضوں کو نہیں دیکھ سکتے. سائیکائٹری کی کچھ تھوڑی سی لمیٹیشن ضرور ہیں اور جس وقت آپ یہ کہنا شروع کریں کہ میں نے ایک او پی ڈی میں 100 مریض دیکھے ہیں یا 50 مریض دیکھ لیے ہیں 3 گھنٹے میں، تو یقین کیجیے گا کہ آپ نے ایکچولی کوئی بھی مریض نہیں دیکھا. ہاں 50 مریضوں نے آپ کو ضرور دیکھا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے 50 لوگ ملنے آئے تھے اور مجھے دیکھ کے چلے گئے، لیکن آپ نے پروفیشنلی کسی بھی پیشنٹ کو نہیں دیکھا. تو اگر آپ 50 مریض دیکھنے کے زوم میں ہیں آن اے گیون ڈے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ریویو کریے اپنی اسپیشلٹی کو. شاید اسکن میں زیادہ اسکوپ ہے اس بات کا کہ آپ 50 مریض دیکھ سکیں، سائیکائٹری میں کم ہے. کچھ نہ کچھ وقت آپ کو ضرور دینا پڑتا ہے پیشنٹس کو. تو کوئی بھی کوشچن سامنے نہیں آیا ہماری چیٹ میں ابھی تک، تو میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ اس ایسپیکٹ کو جس پر ہم نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا میڈیسن امپورٹنس، یہ مجھے سمجھ گیا میڈیسن امپورٹنس سے کیا مراد ہے. جو سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب یو ڈنٹ کاؤنسل مچ اباؤٹ میڈیکل امپورٹنس ٹو ہر میڈیسن. اچھا یہ میں نے اسیوم کیا کہ ہم جب فرسٹ انٹریکشن کر رہے تھے اور میرا ان کے ساتھ فرسٹ انٹریکشن ہے تو میں نے ان کو میڈیسن کی تفصیلات اس وقت بتائی ہوں گی اور جو فالو اپ کا ایک مزاج ہوتا ہے گفتگو کا اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا تھا اس وقت آپ سے. بالکل یقینی طور پر کہ جب ہم پہلی دفعہ تشخیص کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم میڈیسنس کے بارے میں کیا کیا سائڈ افیکٹس اس کے پاسبل ہیں وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں گا ان کو پہلی دفعہ میں. دس واز این ایگزامپل آف اے فالو اپ وزٹ. فرسٹ کانٹیکٹ کے اوپر کیا کیا ہونا ہے اس کی میں نے تفصیل ابھی آپ کو تھیوریٹیکلی بھی دی تھی. اور ایک اینگزائٹی ریلیٹڈ ڈس آرڈر میں یا پینک مریض میں کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ ہمیں ضرور لکھیے گا. I'll be very happy to demonstrate to you کہ ایک پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو یا ڈپریشن کے مریض کو جب پہلی دفعہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو میڈیسنس کے حوالے سے اس کی بیماری کے حوالے سے انفارمیشنل کیئر کیسے دی جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا باتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں، کون کون سے ایشوز اس کے ذہن میں سے نکالنے کو ویبس ختم کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن دوائی کی جو ٹریٹمنٹ اڈیرنس کے حوالے سے امپورٹنس ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ سے ہی کہہ رہی کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ دوائی صحیح سے نہیں کھا رہی ہیں اور ٹریٹمنٹ اڈیرنس نہیں ہو رہی ہے، بعض کا جو سائڈ افیکٹس کی پروفائل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ دوائی کھا رہے. ایک ہی دوائی میں نے لکھی تھی، ایک ہی گولی ان کو لکھ کر دی تھی، انہوں نے کہا مجھے ڈرائنیس ہو رہی ہے دوائی کھانے سے، کانسٹیپیشن ہو رہی ہے. یہ ایک بڑی اچھی انڈائریکٹ ایویڈنس تھی کہ وہ دوائی کھا رہی ہیں کیونکہ دونوں نون سائڈ افیکٹس ہیں دوائیوں کے. تو بعض کا آپ کو ٹریٹمنٹ اڈیرنس کے حوالے سے ایک انڈائریکٹ ایویڈنس بھی مل رہی ہوتی ہے فرام دی ایکسپیرینسز آف دی پیشنٹ. اوکے جناب، تھینک یو ویری مچ. بہت میں نے وقت لیا آپ کا اور انشاءاللہ آن اندر سنڈے ہوپ فلی نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اگلا سنڈے شاید 10 محرم ہوگا تو شاید ہم نہ یہ ایکٹیویٹی کر سکیں، بٹ آن اے سبسیکوینٹ سنڈے انشاءاللہ we'll sit down and do another session based on assessments of patients in terms of
skills. اگر آپ کسی پرٹیکولر ایسپیکٹ آف سائیکائٹری کے حوالے سے اسکلس میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انکلوڈ کریں اس انٹریکشن میں, I'll be delighted to do that. Thank you very much for your time and patience. Pleasure. Khuda Hafiz.